हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं क्रिएट अ वर्चुअल मशीन लैब। सो फर्स्ट क्लिक स्टार्ट लैब। नेक्स्ट हम इसे इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे बाय डूइंग राइट क्लिक फ्रॉम द माउस। क्लिक आई अंडरस्टैंड एंड देन हमारे पास क्लाउड कंसोल इस तरीके से खुल जाएगा। क्लिक आई एग्री एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट हम यहाँ से ट्यूटोरियल को क्लोज करेंगे बाय क्लिकिंग लीव एज ट्यूटोरियल ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। नाउ ऑन टू द टास्क वन। इसमें आने से पहले हमें रीजन एंड जोन सेट करना है। So let's run it one by one. To run these commands, we need to activate the Cloud Shell by clicking on this. We will expand it now. Click Continue. Click Authorize. फाइन, हमारे यहाँ पे क्लाउड शेल टर्मिनल खुल चुका है। यहाँ पे हमें कमांड्स रन करने हैं। तो इससे हमारा जो रीजन है वो सेट हो जाएगा। देन ऑन टू द नेक्स्ट कमांड्स। हमारा ये सेलेक्ट हो चुका है एंड देन अब हम जोन एक्सपोर्ट करेंगे। आफ्टर दिस ऑन टू द टास्क वन, हमें एक वीएम इंस्टेंस क्रिएट करना है। सो हम इधर वापस आएंगे। नाउ क्लिक मिनिमाइज and search for VM instance. Click on it, click create instance, and then हमारे पास यहाँ पे configuration दी हुई है like the name. So copy this, input it here. हमें US West 1C दिया गया है, तो हमने उसे सेलेक्ट किया है। Then next हमें कहा गया है कि हमें E2 मीडियम मशीन टाइप को सेलेक्ट करना है। तो E2 यहाँ पे सेलेक्टेड है एंड E2 मीडियम भी यहाँ पे सेलेक्टेड है। Now we will come back here. Now in the OS and storage, we have to set the operating system to Debian and version to Debian GNU Linux 12 bookworm. So let's go to OS and storage, go to change. Okay, it is there. The boot disk type is also it, and the size is also good. All right. Now we will go on to the networking, and in the firewall we will allow the HTTP traffic. Then next, click create to create the VM instance. तो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो विल कम बैक टू द लैब एंड हमें SSH लॉन्च करना है। सो यहाँ पे हम वापस आएंगे, क्लिक SSH एंड एक SSH सेशन शुरू हो जाएगा। क्लिक ऑथराइज, देन हम यहाँ वापस आएंगे एंड इन कमांड्स को रन करेंगे वन बाय वन इन दी SSH।
Click enter. Let's enter the split screen mode for it. Next, we have to run this command to confirm that the nginx is running. And yes, it is running. Now next, we have to return to the Cloud Console and click the external IP link in the row for our machine to add the external IP value to this. And it should say this. Firstly, check my progress. If this works, you don't have to do this. And yes, it is completed. It means this is also working. Now onto the task 3, we have to copy this command and then restore the Cloud Shell terminal and paste it here. Now this command will create similar instance like that, but with other name, like that was GCE lab. This is GCE lab 2. So you can create the VM instance in both the ways by using the commands or directly going to the VM instance panel. And it is created. Click check my progress and it is completed. Congratulations, the lab is complete. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such amazing lab solution videos.